Okay, so what's my next requirement? Let's suppose you want to create account record. So to create the account record, there is no need to create custom controller. We can achieve it by, you can say by standard controller, we can easily achieve it. Okay, but if I'll say we have to create one UI and on to we have to create some section. So it's the first, second, and third one. Okay. So in first section, I want to display the fields of you can say account name, type, rating, industry, and in second section, I want to display the field of contact. In third section, I want to display the field of opportunity. So why standard controller is it possible or not? So why standard controller it is not possible because we can't add more than one controller, and why one controller it is not possible. So what we will do in this time, we will use custom controller. Okay. So I'll create the UI on which I'll display the fields of accounts and I will display the field of contact as well as opportunity. Then I will insert it. Okay. So I'm going to create one class TML controller one, and I'm going to create one page. Going to add controller here. Okay. So I'm going to create Visual Force page. First, I'm going to create form, then page block. Inside the block, I'm going to create page block button. Inside the buttons, I'm going to create command button. So I'm going to create two buttons, save and cancel. Okay, so in class, I'm going to create two method, public void save method and cancel method. Okay. Now what I'm doing, I'm going to create one some section. Inside the section, I'm going to create the field. So page block section. Okay. So if you want to use standard functionality, so what you can do, you can create object type of variable like public account ACC. So automatically you will get label name of the field like name, type, dating industry. You will get list type of field as well as value.
And if you don't want a standard functionality, you can create variable for, if you want to create five field for account, create five variable for account, five variable for contact, five variable for opportunity. Else what you can do, you can create object type of variable. That time you need to create only three object type of variable, and you can create multiple field in Visual Force space. So I'm going to create object type of variable. In previous scenario, also you can create object type of variable. Okay, so now I'm going to initialize it. So I'm going to create one constructor. Okay, so now I'm going to use it in Visual Force space. Simple write apex input field and write the value acc dot name section title name you can write account field or information. Type rating industry. Okay, now I'm going to create second section for contact. I want to display first name, last name, phone, email, these field. Sir, Yes. so when we create a variable as per the Mm, field of any object, so on that time we mm. use input text, I Yeah, think. Hmm? that time we will use input text, we will not use input field. ठीक ओके, है, okay. पहले वाले सिनेरियो में हमने फील्ड टाइप के वेरिएबल क्रिएट किए थे, सो आई यूज्ड इनपुट टेक्स्ट. ओके, ठीक है, एंड व्हेन वी विल यूज इनपुट टेक्स्ट वी हैव टू एंटर द लेवल नेम ऑफ, ठीक है, बट इन इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली वी विल गेट द लेवल नेम बॉक्स okay, के sir. पास. हाँ, backspace block section. This time title or header is opportunity information. Apex input field, pass the value. So opportunity dot name. Automatically input field, it will take the label name of the name field. Name, close date, stage name, lead source. Okay, you can write the field name. I think it's the stage name. Yeah. So there is no error. Checking two button. Okay, all are correct. So when I will click on the save button, I don't want to refresh the page, reload the page. So I'm going to use re-render.
Any variable name you can write, and form I want to re-render it. id is equal to a. Okay, then dml. Okay, now what I want when I'll click on the save button. Okay, so it this record should be saved. So I'm writing insert acc. Okay, account record will save. I want to insert contact, insert con, as well as I want to insert opportunity. So opportunity will insert. Okay, so ठीक है. What I want if I am entering the information. Where is the UI? Yeah, if I am entering the information and I am writing the first name, last name, account name, opportunity name. So what I want, account and opportunity both are associated with account. Both should be linked with account. Okay, contact and opportunity, they should be linked or they should be attached with account. So whatever the account name I'm writing, they should be attached with, okay, with this account. So how can we do it? How we will associate it? So if you want to associate it, so when you will insert the account, you will get the ID of the account. Okay. So what you can do here, you can write con dot account ID. कॉन्टैक्ट में रिलेशनशिप फील्ड है जिसका नेम अकाउंट आईडी है. कौन डॉट अकाउंट आईडी, इट शुड बी एसिस डॉट आईडी. ठीक है, जो भी अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ उसकी आईडी पास करें हम कॉन्टैक्ट में. सो इट्स अ वे टू एसोसिएट इट. ऐसी अपॉर्चुनिटी डॉट अकाउंट आईडी, वॉट इट शुड बी एसीसी डॉट आईडी. So before inserting it, we are passing the ID of the current account record. Okay, then we are saving it. If we are clicking on cancel button, that time what we are doing, we are creating the instance. ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं मतलब खाली हो जाएंगे ये. एसीसी इज इक्वल टू न्यू अकाउंट ब्लैंक वैल्यू मिलेंगे हम. व्हाट आई वांट टू रीडायरेक्ट ऑन अकाउंट पेज. whenever I'll click on save button, I want to redirect on account page. So I'm going to use page reference class. Write any name, reference variable for this reference class, pass the id where you want to redirect. I want to redirect on account detail page, so I'm passing the id of account. Then we have to return it. Whenever you will use it, you have to return it. So return variable name. So what is the data type of pg? Page reference. So if you are, Page reference. yeah, so return variable name. What is the data type of the pg? Page reference. So here you have tried the return type. Now return type, it void, it won't be. Now what would be the, you can say return type, it will be page reference. Now I'm going to save it, so I'll not get any error. Going to the visual force page, click on preview button, and now I am entering the information. Okay, so I am entering the information and click on save button. So when I will click on the save button, I'll redirect on the detail page of the account. Okay, so here I'll get Mr. Raj information. And when I will check the contact, so contact will also create Aditya Mishra. And I'll check the opportunity, opportunity will also create first opportunity.
ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? मिश्रा जी से। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस सिनेरियो? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस सिनेरियो? सर, if we make it blank ACC कौन और OPP in the cancel method, तो कोई फर्क थोड़ी है। ब्लैंक मतलब? मतलब यहाँ पे आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, यहाँ पे इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे कैंसिल कैंसिल मेथड में। हम्म। और और वो उसको ब्लैंक छोड़ते हैं ऐसे ही, सिंगल कोट से। नहीं, सिंगल कोट फिर वेरिएबल नहीं है ना। मुक्ता मतलब कि नल वैल्यू पास करनी हो, लिस्ट में हम नल वैल्यू नहीं पास करते। मतलब जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ना, जिनके नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं, उनके लिए वो इंस्टेंस ही क्रिएट करते हैं, चाहे वो लिस्ट होए, चाहे कोई भी क्लास होए, चाहे ऑब्जेक्ट हो। ओके, अगर हम यहाँ पे नल लिखेंगे या तो फिर सिंगल कोट वाले लिखेंगे तो नहीं होएगा ऐसा। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। वी विल गेट एरर मैसेज। ठीक है। बट कोई वेरिएबल होता तो वी कैन राइट इट। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता। जब भी नॉन प्रिमिटिव टाइप की वो होएगी वैल्यू, एंड यू वांट नल, ठीक है, वो नल हो जाए, तो आप क्या क्या करोगे? हमेशा एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे। ठीक है। ठीक। ओके, एनी अदर डाउट इन दिस सिनेरियो? ओके है या बोरिंग चल रहा है? ठीक है सर। गुड। ओके। सर एक वो बता देते, सेट रिडायरेक्ट भी यूज करते हैं ना उसमें। कौन सा मैम? सर सेट रिडायरेक्ट होता है ना। सेट रीडायरेक्ट? मैंने मैंने नहीं किया कभी वैसे यूज। सेट रीडायरेक्ट? विजुअल फोर्स पेज में होता है ना वो। यस सर। इसमें ट्रू फॉल्स करना होता है आई थिंक। Set the value of page reference object redirect attribute. If set is true, or direct is performed through client side redirect. System page reference set redirect boolean true. Message get request. The view state which use post if set to false. Server side. You are the page reference. ये तो उसके लिए हो गया मैम, इंटीग्रेशन के लिए। सर अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो रहने दो। Which uses post if set to false. ठीक है, नेक्स्ट जो सिनेरियो करना है हमें, वी हैव टू क्रिएट वन यूआई। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट वन सेक्शन in which we will enter account field, account information. Okay, then we have to create one table. Okay, one table we have to create for contact। ठीक है, contact के लिए टेबल क्रिएट करनी है, where user will enter first name, last name, phone, and we will add one button।
ठीक है, कॉन्टैक्ट की फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, एंड वी विल राइट एक्शन। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट व्हाट you will get input box in a table. A- and here you will enter first name, last name, phone, and you will get one button here, that is add button. Okay, and here you will enter the account name type this field. So you will enter account information, then here you will enter contact information, and you will create one button save and cancel. When you will click on the save button, record will get saved. Okay, if you are adding one contact will be associated, and if you are clicking on add button, so second box should be added, like that. If again you are clicking on add button, third box should be added, means third contact you can create, and all the contacts should be associated with the account. ठीक है, so it's our requirement which we have to fulfill. ठीक है, करूँ इस वाले असाइनमेंट को? गुड. Okay, so first we have to check, we need one account to store the account information. ठीक है. Second, we can you can say we can create many contact. If contact is more than one, so means we can create many contact. So many contact where we will store, we will create list of contact. Okay. So I'm going to create two variable. One is account type, second is list of contact. So file, new apex class, tml, ctrl, third. Okay. So here I'm going to call the class, writing the class name, and what I'm doing, I'll use account, public account acc cat set, public contact con. Okay, instead of contact we will create list of contact, and we will display the contact in a table. Okay, now what I'm doing, I'm going to create one constructor to initialize it. Okay, so what I'm doing, going to the Visual Force page and I'm going to create the UI. Apex form, then going to create page block, and then I'm going to create button. Inside the button, I'm going to create command button. Value, save records, action, save method. Inside the class, I'm going to create save method.
Okay, now what I'm doing, after creating the buttons, I'm going to create one section and title name, account info, and here I'm going to create some field of account, apex input field, value acc dot name, type rating industry. Okay, so for value I have added. Now what I'm doing, I'm going to create a table and where I'll create the button, add button also, and I'll enter the data of contact object. Okay, so inside this section I've created table. They are two mandatory attribute which we have to pass, value and where. So in value, what I'm passing list of contact, con list. Variable name, I'm writing C. Then apex column. Okay, so what I'm doing, I'm going to open it and then close it. And what I want to enter the information. So to enter the information, I'm writing apex input text. Okay, I'm going to use apex input text and value. Whatever I'll write in input text, I'm going to store it in first name of the contact. And you can also write header value. So in table as a header, first name should be display. ठीक है, input text box भी मिलेगा हमें. So like that you can create 2 3 box. So I'm going to create 3 because last name is mandatory on, and one button I'm going to create. So header value action, and instead of text, what I want button, apex command button, value add. Okay, you can fire any action to add the, you can say column. Okay, I'm going to preview it. ठीक है, फर्स्ट नेम अकाउंट की इंफॉर्मेशन आई एम एबल टू व्यू इट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन एक्शन. ठीक है, बट व्हाट आई एम नॉट गेटिंग इनपुट टेक्स्ट. ठीक है, बॉक्सेस नहीं आ रहे हैं, ना ही ऐड बटन आ रहा. तो सेव रिकॉर्ड को पहले तो मैं टॉप पर ही दिखाता हूँ, बटन्स लोकेशन टॉप. ठीक है, अब एक भी बॉक्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट में जब हम व्हेन वी विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट, देयर शुड बी सम रिकॉर्ड इनसाइड द लिस्ट. ठीक है, लिस्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड होना चाहिए. अब लिस्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू ऐड वन रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट कौन इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट. आई एम गोइंग टू ऐड वन रिकॉर्ड. ठीक है, सो कौन लिस्ट डॉट ऐड कौन. ठीक है, जैसे पेज रिफ्रेश होएगा बटन ऐड, मतलब कि एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा. एक रिकॉर्ड मतलब हमने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर रखा है.
हम एक कॉन्टैक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन। अब मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट्स आई वांट, व्हेन आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन, सेम, ठीक है, सेम ऐसे ही एक और टेबल आ जाए। ठीक है, वेन एवर आई विल क्लिक ऑन दिस सेव बटन, व्हाट आई वांट, ऐसे ही एक और टेबल आ जाए जिसमें मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन एंटर कर सकूँ। ठीक है, अब वो लॉजिक यहाँ लिखना होगा मैं ऐड मेथड में। ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि अब मुझे दोबारा से एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करना होगा इसमें, लाइक दैट, कॉन्टैक्ट ऑन इजकल टू न्यू कॉन्टैक्ट, कोई एक और नेम जो भी लिखना चाहो, कॉन लिस्ट डॉट ऐड कौन बन। जब भी ऐड मेथड कॉल करूंगा एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होएगा, वो ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन एंटर करी तो इमीडिएट यूज कर लीजिए ना, तो बार बार उसमें वैल्यू फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐड बटन क्लिक करने पे ऐड हो रहा हूँ। ठीक है, हाँ मिश्रा जी, बोलो। मैं कह रहा हूँ अकाउंट नेम में इमीडिएट थ्रू कर दीजिए, तो हाँ हाँ, बार वो बार कर उसमें लूंगा। वैल्यू। ठीक है भाई, कर लूंगा कर लूंगा। ठीक है, अब देखो ये कॉन्टैक्ट कौन इजकल टू न्यू कॉन्टैक्ट, ऐड मेथड पे क्लिक कर रहा हूँ वही। सर ठीक एक है, बार यूज बताना 8 और 9 लाइन का। 8 और लाइन 9। 8 और 9 ये वाला है ठीक अपने है, इंस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको समझना। बिना उसके है देखो, अगर मैं 8 और 9 लाइन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर दी मैंने, तो ये जो कॉन लिस्ट जो बना रखी है मैंने, हाउ मैनी यू कैन से डेटा आर अवेलेबल इन कॉन लिस्ट, कॉन लिस्ट के अंदर कुछ है, कुछ स्टोर कर सकते हैं हम कॉन लिस्ट के अंदर? नहीं, खाली है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं अगर इसको व्यू करता हूँ, तो हमने विजुअल फोर्स पेज में क्या कोड लिखा है कि एक टेबल क्रिएट करी है, टेबल में हम क्या कर रहे हैं, इटरेट करा रहे हैं कॉन लिस्ट को। जब टेबल, ठीक है, कॉन लिस्ट जो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, इसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो कैसे डेटा हम इटरेट करा रहे हैं? ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होएगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बॉक्स डिस्प्ले कराने हैं, तो मैं एक डेटा डमी डेटा, ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कॉन इजकल टू न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, तो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इस लिस्ट में इस खाली कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहा हूँ, कॉन लिस्ट डॉट ऐड कॉन। ठीक है, खाली कॉन्टैक्ट को मैंने, एक कॉन्टैक्ट को मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं एक कॉन्टैक्ट को ऐड करूंगा, लिस्ट में एक कॉन्टैक्ट है खाली, ठीक है, उसकी में हम खाली कॉन्टैक्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट तो है एक, अब क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक तो कॉन्टैक्ट हो गया। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ, एक और टेबल आ जाए, जब जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ एक और टेबल आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना मुक्ता, क्यों ऐड किया ये कॉन्टैक्ट कौन इजकल टू न्यू कॉन्टैक्ट? यस सर। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मैं ऐड बटन पे क्लिक करूं, तो एक और कॉन्टैक्ट आ जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसमें सेम कोड को लिख देता हूँ। ठीक है, आई एम क्लिक ऑन ऐड बटन, आ गया एक और कॉन्टैक्ट, ऐड बटन, आ गया कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोड यहाँ तक वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये लाइन नंबर 9 और 10 सेम है बिल्कुल, मतलब जो 9 10 14 15 सेम है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ऐड मेथड है डायरेक्ट कॉल करा सकता हूँ। ये इस लाइन के कोड लिखने की जगह यू कैन राइट ऐड मेथड। ठीक है, जैसे ही मैं प्रीव्यू करूंगा, पेज रीलोड होएगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होएगा। कंस्ट्रक्टर में हम क्या कॉल करा रहे हैं, ऐड मेथड फंक्शन को, ऐड मेथड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब अगली बार ऐड मैथ बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होएगा, एक और कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। थर्ड टाइम फिर, फोर्थ टाइम फिर, ये मेथड एग्जीक्यूट होएगा।
बट जब पेज रीलोड होएगा फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम क्या होएगा, एक बार ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल करा लेगा मेथड को और एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये लाइन सभी को समझ में आई? Yes, sir. ओके है सभी के लिए? Yes, sir. गुड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी आप वॉट एवर डेटा यू आर एंटरिंग इन अकाउंट, आई एम गोइंग टू इंसर्ट। ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू इटरेट द रिकॉर्ड ऑफ लिस्ट। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट 5 ऐड करे हमने, तो पांचों कॉन्टैक्ट को मैं इटरेट करा रहा हूँ। सो फॉर कॉन्टैक्ट कौन कौन लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये एसोसिएटेड होने चाहिए अकाउंट से। सो कौन डॉट अकाउंट आई डी इजकल टू ए सी सी डॉट आई डी, जो भी अकाउंट की आईडी होगी वो ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करी कॉन्टैक्ट की, जिसको मैं इंसर्ट कराऊंगा। इंसर्ट कौन लिस्ट,